हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका फिर से पिक्सल टेक के नए एपिसोड में। मेरा नाम है मनन और जैसे कि आप सब तो पता था आज इसरो के PSLV C49 का लॉन्च था। 1 घंटे पहले लॉन्च खत्म हुआ और इसरो ने सभी 10 सैटेलाइट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस किया। नहीं होता तो ये रहे लॉन्च के हाइलाइट्स। बूस्टर अकेला रहता है PSLV DL में। All sequences are We are 45 seconds away from the scheduled launch time. अब हम कुछ देर शांति ग्रहण करेंगे और आप सभी दर्शक प्रमोशन का आनंद लीजिए। -30 seconds. real-time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. The special camera is focusing intently on the launch vehicle and the range operations director -15 looking very seconds. intently at his monitor. 15 seconds, 12, 11 10. and 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इग्निशन। +5 seconds. You have just launched a majestic liftoff of PSLV C49 carrying EOS-01 with 9 co-passenger satellites, and the range operations director has confirmed the liftoff and that the performance of PS1 is normal. जी हाँ, अभी आपने देखा प्रमोशन यान का लिफ्ट ऑफ बहुत ही सामान्य तरीके से बढ़ता हुआ और यह गर्जना करता हुआ आकाश में। That is PS1. Its total thrust is 4,800 kilonewtons. It uses solid propellant, HTPB based solid propellant, and alongside there are 2 strap-on boosters. हम +1 यहाँ minute. स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और अपने अवलोकित पथ पर The altitude and the Upon separated. अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर का घोषणा है यहाँ कि Stage performance स्ट्रैप ऑन normal. सेपरेट हो चुका है। P2 change over to SABT2. now you can see the flight events on your screen. The PS1 has been flowing normally and its performance is normal. The total burn time is about 108 seconds, and then it will be separated from the ongoing vehicle. Stage separated. Second stage engine started. अभी Now you Close have scope guidance initiated. +2 minutes. ROD का अभी घोषणा हुई है और उन्होंने बताया फर्स्ट स्टेज सामान्य निष्पादन करता हुआ यान से पृथक हो चुका है और दूसरे चरण का प्रज्वलन हो चुका है। Second stage performance normal. now that the first stage action time is complete, it has been separated from the ongoing vehicle, and we have seen the confirmation from the range operations director that it has been separated, and you can see on your screens the flight regime of PS2. Payload bed separated. And the payload fairing has been separated, and as you have already heard, the closed loop guidance has been initiated. Second stage performance normal. अभी ROD ने फिर से घोषणा की है कि ऊष्मा कवच का पृथक्करण हो चुका है। अब हमारा यान वायुमंडल से बाहर जा चुका है। The PS2 takes the launch vehicle up to 225 kilometers altitude and increases its relative velocity from 1.6 kilometers per second to 4.3 kilometers per second. Here you can see the time versus relative velocity plot and the flight events. अभी आप एनिमेशन पे देख पा रहे हैं PS2 का सामान्य निष्पादन। PS2 का प्रज्वलन सामान्य होता हुआ
अब प्रमोचन यान क्लोज लूप Then गाइडेंस के stage अंतर्गत है। performance normal. Now it is about 4 minutes after the launch, and the PSLV stage 2 is performing, and its performance is observed to be normal. It will continue to perform till 261 seconds, which amounts to 4 minutes 21 seconds. अगली घटना PS3 का Stage ignited. आरओडी ने अभी घोषणा की PS2 का सफलतापूर्वक पृथकीकरण और PS3 का इग्निशन हो चुका है। Stage performance normal. You have just heard the range operations director giving a confirmation that the PS2 stage has been separated, the PS3 stage has been ignited, and its performance is normal. PS3 का Third क्रियाकाल stage performance normal. PS3 का क्रियाकाल करीब 123 सेकंड का होगा। इस तरह यह अपना पूर्ण ज्वलन काल T+385 सेकंड्स पर पूर्ण करेगा। इसके बाद और अब किसी भी समय उपग्रह PS4 से पृथक होकर अपनी कक्षा में अंतःक्षेपित होगा। On your screens, you are able to watch the flight parameters along with the ground trace. The next flight event is the primary satellite separation. QoS-01 satellite separated. Now the jubilant moment on your screens. अभी आप ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से ऑनबोर्ड कैमरा की मदद से देख पा रहे हैं कि EOS-1 का पृथकीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। The EOS-1, the primary satellite of PSLV's C-49 mission, has been injected into the orbit, its intended orbit, and the visuals you are getting from the onboard cameras live. जी हाँ, यह पल सभी वैज्ञानिकों के लिए काफी उत्साहवर्धक। That was the separation of the first satellite and 9 more customer satellites in line for the separation. And PS4 still in orbit, reorienting itself for the further injection events. Not to NAV. Our local, we don't have any connection to NAV right now. So our local. आप ये घटनाक्रम देख पा रहे हैं EOS-1 सेपरेशन। अब आरओडी ने अनाउंस कर दिया है R2 उपग्रह अंतःक्षेपित हो चुका है, अपने निर्धारित कक्षा पर अंतःक्षेपित हो चुका है। satellite separated. The R2 satellite and the Kleos 1A satellite have been separated. R2 is a technology demonstrator satellite from Lithuania, as we have told you earlier. The next flight event is the KSM-1B separation, which is going to take place any time now. These are the visuals from the onboard camera of the launch vehicle. Mission Control Center, all the scientists are waiting eagerly for the next satellite separation. KSM-1B satellite separated. ESM-1B सैटेलाइट का सफलतापूर्वक अंतःक्षेपण किया गया। Now, the second KSM satellite in this particular mission, they are from Luxembourg, and these are meant for maritime applications. अभी आप अपनी स्क्रीन पर पृथ्वी का विहंगम दृश्य करीब 578 किलोमीटर की ऊंचाई से देखते हुए KSM-1D satellite separated. Screens a very beautiful and vivid visual of the Earth.
Next, we stand by for the KSM 1C KSM separated. 1C also has been separated. So all the 4 satellites Four of the one Clio satellite space separate. have been separated. Now the Lemur satellites, one by one, they will detach. जी हाँ, KSM-1C को भी यान से पृथक कर अपनी कक्षा में अंतःक्षेपित कर दिया गया है। कक्षा आरओडी का अभी अनाउंसमेंट, लेमुर 1 और लेमुर 2 अमेरिका के सैटेलाइट्स सफलतापूर्वक अंतःक्षेपित कर दिए गए हैं। Three satellites separated. जी हाँ, अब लेमुर 3 भी अपने निर्धारित कक्षा पर अंतःक्षेपित। The Lemur satellites are from Spire Global Inc., USA, whose purpose is multi-mission remote sensing. Now we wait eagerly for the last satellite separation of this mission, that is the Lemur 4, which can happen. 4 satellites separated. Now All here 10 we have satellites are separated. Now we have Mission here a completed. successful Handing over mission to with mission all the director. 10 satellites separated and injected into the world, into their intended orbit. 01 and all 9 customer satellites into the desired orbits. PSLV C-49 EOS-01 mission is fully accomplished. मिशन की सफलतापूर्ण पर सबको शुभकामनाएं देते हुए चेयरमैन आया सरो